अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे डायनामिक्स क्वेश्चन 11 टू क्वेश्चन 15. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन 11. A block of wood is placed on a table. External forces act on the block, but the block remains stationary. A student suggests three conditions for the block to remain stationary. Condition P. The resultant force on the block must equal zero. Acha, this is a right condition for the block to stay stationary. Because if there is a resultant force, there must be acceleration, and acceleration will lead to a gain in speed, right? So block will no longer be stationary if there is a resultant force. So P is the right answer. Q. The resultant moment on the block must equal zero. For the object to stay in equilibrium, two things must be taken into account. दो चीजें दो चीज एक ये है कि resultant moment should be zero, and the second one is resultant force should be zero. Right? So both P and Q are correct. R. The external forces must act through the center of the block. This is completely irrelevant to the topic. So P and Q are the right answer. Just ignore R. That's just retarded. Question 12. A car travels on a horizontal road around a bend at constant speed. What is the direction of the resultant force on the car? अच्छा ये मैं हमने पहले भी मेरे ख्याल से किया हुआ है इन क्वेश्चन 1 to 5. तो जब भी ना एक बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रही होती है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मिडल. It's always towards the center. That's why it's called the centripetal force. So I think the answer is pretty evident. Towards the center of the bed. Question 13 is a very similar question to the one we just did. Question 13. A satellite is shown moving around the Earth in a circular path at a constant speed. Which arrow shows the direction of the force on the satellite? I'll repeat it again. When an object is moving in a circular path, the resultant force is always towards the center. So, D is the right answer. अगर आपको समझ नहीं आई तो आप रिवाइंड करके ये वाला भी देख लें वीडियो पिक्चर. So, question 14. A coin falls from rest through the air and eventually reaches a constant speed. ठीक है ना? Constant speed मतलब terminal velocity. There is a resultant force acting on the coin due to the two forces P and Q shown in the diagram. What happens to the force P and what happens to the resultant force before the coin reaches constant speed? Constant speed मतलब terminal velocity. अच्छा, जो Q है ना, that's weight. Q is weight. Oops, sorry. Q is weight and P is air resistance. Air resistance. There you go. P is air resistance. तो initially क्या होता है when a body like उसको छोड़ा जाता है तो initially weight is much larger than the air resistance. लेकिन as the body speeds up, as it like gains speed, तो जो एयर रेजिस्टेंस होती है दैट इंक्रीजेस ग्रेजुअली. ठीक है ना? एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही होती है और जो वेट का फोर्स होता है इट स्टार्ट्स टू न्यूट्रलाइज. जो वेट का फोर्स होता है स्टार्ट्स टू गेट कैंसल्ड बाय द एयर रेजिस्टेंस, राइट? तो इनिशियली फोर्स पी will start to increase because force P is air resistance और जैसे जैसे speed ज़्यादा होती है air resistance increases. Resultant force will start to decrease because weight का जो resultant force initially resultant force बहुत ज़्यादा होता है because weight is the single entity acting on the object when the object is initially dropped. बट आहिस्ता आहिस्ता एयर रेजिस्टेंस एक्ट करने लग जाती है ऊपर की तरफ. नीचे की तरफ वेट एक्ट करता है, ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है. जो नीचे वाला फोर्स है वो ऊपर वाले फोर्स को कैंसिल ऊपर वाला फोर्स कैंसिल कर देता है नीचे वाले फोर्स को.
So C is the right answer. P, force P increases and resultant force decreases. Question 15. A student lists three changes that affect the stopping distance of a car. One, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं which change or changes increase the stopping distance. Increase the stopping distance मतलब जो टाइम वो ले रहा है स्टॉप होने में, मतलब पहले ये इतना टाइम ले रहा था और इंक्रीज होके इतना टाइम लेने लग गया, इतना डिस्टेंस लेने लग गया, राइट? सो दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग. तो वन, इंक्रीजिंग द ब्रेकिंग फोर्स. जब हम ब्रेकिंग फोर्स इंक्रीज करेंगे ना तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड थिंकिंग डिस्टेंस. सो अगर हम ब्रेकिंग फोर्स ही इंक्रीज कर देंगे तो इट विल स्टॉप इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम. इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड. जब टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन इंक्रीज होगी ना तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी, ब्रेकिंग फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज द मोर द the more the friction, the faster it will break. 3. Increasing the speed of the car. Increasing the speed of the car will not, yeah, it will increase the stopping distance because it will take a larger amount of time to stop a car that is moving at 120 kilometers an hour than a car which is moving at 60 kilometers an hour. So, 3 is the right, B is the right answer. So, thank you for watching. I hope you enjoyed and take care.